सर हाँ सर ये आप स्पॉटलाइट कर लीजिए, मुझे लगता है वो ध्यान। अभी ठीक है. Okay. So now we do one more problem. Okay. Divider bias, approximate method. Divider voltage divider bias. Voltage divider bias. So this problem came in exam JAM 2016. So in this problem, they have given one divider circuit R1, R2. Okay. And transistor as usual, common emitter mode. RE value is given as 0.5 kilo ohm and VCC is given 6 volt. Okay. Now here also they given one resistance. Okay. Resistance value 2.5 kilo ohm. RC is 2.5, 0.5, R1, R2 unknown. Okay. And they given VBE. They are asking what is the value of R1 by R2. In the question, beta they are given 50 and they are given IC equals to 1 milliampere. Okay. So you need to find the ratio R1 by R2. Okay. So we use approximation method. Okay. So first of all, the approximation method, we assume IB 0. Okay, negligible. Okay. And we say if we find the voltage VB here. So voltage VB, if I find VB, okay. So my VB will be now what? 6 upon R1 plus R2 into R2. Okay. Now once VB known, okay, then I will try to find the VE. Okay. And VE in the question already given because they are given already IC, they already given. Okay. So I assume the current is IC here. Okay. Almost IC, I'm taking current almost IC, I'm taking IE equals to IC. Okay. So basically I is beta plus 1 IB. Okay. Or I equal to almost IC, I can neglect the IB here. So IC I know. So V will be automatically how much? 0.5 kilo ohm. Okay. And this RE resistance already there, and the current is IC is 1 milliampere. So this cancel out. So I got 0.5 volt VE. Okay. Now I know that VBE is VB minus BE. Okay. So I want VB. So VB will be VBE minus VE. That is 0.7 minus 0.5. Okay. So this gives me 0.2 volt. सर हाँ. VB प्लस VE आएगा ना? प्लस VE होगा ना? VB plus V. Okay. That will be 1.2 volts. 1.2 volt. Okay. Now let us find. So VB पता चल गया आपको और VB हमारा ये है. क्या वैल्यू पुट कर दो और निकाल लो आपका वैल्यू क्या है R1 by R2 का. So VB is your 1.2. Okay. 6 upon R1 plus R2 into R2. Okay. So this will become 1 plus 2 R1, 1 plus 2 R2. This is your 6 R2. Okay. 6 R2. So this is be ये कितना आ जाएगा बताओ. 1.2 इधर आ जाएगा तो 4.8 R2 upon 1.2 R1. Okay. And R1 upon R2 आपका आ जाएगा कितना? 4.1.2. That is 4. Okay. And that is your answer.
So this is a very quick technique, okay, solving the voltage divider by approximate method. Now we'll do same problem, but now we'll do accurate analysis. We won't assume IB 0, and we will try to calculate here. Okay. So now if you want, you can find the current also. What is I? Once you know the V, once you know the V R1 R2 ratio, you know. Okay, still you don't know what is R1 R2. Otherwise, okay. Otherwise, you can calculate the I also. So one thing I want to show you, mention you, once this resistance is removed, okay. Here IB 0, but current here is a milliampere. Once you remove this resistance here circuit, okay, then automatically IB current will flow here. So when IB is microampere, so here drop will be very less. So once you remove this resistance, the voltage VP will increase here. Okay, that will do some problem later. So now accurate analysis. Now accurate analysis, what will happen? You have, okay, voltage divider circuit, R1, R2. You have this one. Here you have RC, and here you have RE, and RE is grounded. Okay, here you are applying a VCC. So now I want to do accurate analysis. Okay, let me first check the circuit. Whether the circuit is correct. Okay, circuit is okay. Now, in order to do this one analysis, what I can do, okay, I can assume this circuit, okay, R1 is this one, R2 is this one, okay, and this is my VCC, okay, and here transistor is connected, okay, and here RC, here you have plus VCC, okay, and I have separated the VCC, okay, just to calculate, okay, and this is my RE, which is grounded, okay. Now, in order to calculate the or solve the circuit, what I assume, I will take now, I will open this circuit from here, okay, and this circuit is load for me. So what I'll do, I'll find the equivalent circuit of this one, okay. So I will find basically the open circuit voltage, okay, across this this terminal, that will be my V Thevenin, okay. So I will find V open, which will be my V Thevenin, okay, and I'll find the R Thevenin also. So first of all, let me find the V Thevenin. So V Thevenin कितना हो जाएगा? So V Thevenin will be your V Thevenin कितना का V open कितना होगा आपका? V Thevenin or V open will be your VCC upon R1 plus R2 into R2, same like VBB, same like VB, okay, there's no change. Now the next thing is to calculate R Thevenin. So R Thevenin will be what? R Thevenin will be, you need to short circuit this one battery. So once I short circuit this battery, now this resistance, okay, they are parallelly connected. So this will be your R1, R2, okay, R1 plus R2. So the R Thevenin, okay, across this one is your this one, okay. Now I can write the equivalent resistance, equivalent circuit for this Sir, one. wait a moment, sir. Yeah, with Thevenin, okay. So Yes, sir. Okay, sir. okay, so now this transistor, okay, I'll again connect here, and
here what I can write, R Thevenin, and I can write here V Thevenin. Okay, and here I have RC and plus here RE also there. RE also there. Okay, here voltage drop is VBE. Here I have a plus VCC. So this is my equivalent circuit for the given problem. Okay. Now you can do the analysis here, and this is VThevenin. Okay. So I can write now equation in this loop, input loop, that will be my VThevenin plus IB R Thevenin. Then there will be VBE, this VBE, and then here is beta plus 1 IB. Beta plus 1 IB equals to 0, and I can find IB value here, VThevenin minus VB R Thevenin plus beta plus IB. Yes, RE. RE also there. RE, okay, RE beta plus 1 RE IB. Okay, so this will be your formula for IB. So IB know, you know IC, that will be beta IB. Okay, and your VC will be want VCC minus IC RC plus RE. Okay, and your IC saturation will be VCC upon RC plus RE. Okay, सर हाँ और ये हमने ना लास्ट सर्किट के जैसे ही किया कि जब हम फर्स्ट ब्रांच लिखते हैं तब हम आरई के अक्रॉस का करंट बीटा प्लस 1 लेते हैं, बीटा प्लस 1 IB. आईबी लेते हैं, लेकिन हम जब बीसीई का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना तो वही करंट हम IC इक्विवेलेंट। IC लेते हैं, हाँ सर, तो मतलब एक में तो बराबर ही तो है। आई क्या होता है, IC प्लस IB होता है, हाँ सर, और ये क्या है आपका बीटा IB है, हाँ और ये IB है। हाँ तो इसके कंपैरिजन में ये नेग्लेक्टेड है, हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, सर वो क्लियर है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम जो अप्रोक्सीमेशन एक को लगाते हैं वो दूसरे को भी अप्लाई चाहिए ना। लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लगा के देखो। आप चाहो तो इसको बीटा प्लस 1 की जगह बीटा IB लिखो, दैट द सेम IC। ओके। तो क्योंकि ये टर्म तो नेग्लिजिबल है ना कंपेयर टू दिस के। हाँ आप चाहो तो ले हटा दो इसको भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आंसर में फ्रैक्शंस में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए तो ज्यादा एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट चाहिए तो अप्रोक्सीमेट लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ you have been given voltage divider circuit. Okay, and a voltage divider circuit you have been given R1 equals to 10 kilo ohm. Okay, R2 equals to 1 kilo ohm, R2 equals to 1 kilo ohm, and RC2 kilo ohm, and RE given 200 ohm. This is 200 ohm, and VCC is given the question 10 volt, beta is 100, and VBE is 0.3 volt. Okay, so solve the circuit for this one. What will be the operating point?
So first of all, you need to find VThevenin. Okay, so VThevenin will be your VCC, which is 10 upon R1 by R2, 10 kilo ohm, and 11 kilo ohm. Okay, 11 kilo ohm or 10 to the power 3 ohm into R2 is 1 kilo ohm. So cancel. Okay, so 10 by 11, this becomes 0.9 volt. Second, you need to find RThevenin. RThevenin will be your how much? R1, R2, 10 kilo ohm, 10 into 1, okay, kilo ohm square, okay, and R1 by R2 is your 3. So how much will come? Tell me. 11. Okay, again, this is also 0.9 kilo ohm. Now you can write a circuit, okay, VThevenin, RThevenin. This is your RE grounded, okay, and here you have yes VCC, and RC is 2 kilo ohm, okay, and you can your RThevenin is 0.9 kilo ohm. So beta is given 100, so you can solve now. RE is 200 ohm. So now your IB will be what? IB will be VThevenin minus BB upon RThevenin, okay, plus beta plus 1 RE, that is 0.9 volt minus 0.3. RThevenin is 0.9 kilo ohm plus beta plus 100, 101 RE is your 200. Okay, so tell me what is coming IB. So it will come around 28.43. Okay, 0.843 into 10 raised to minus 5. okay, this is microampere. And if you find the IC will be 100 into 28.43 microampere. So this will become 2.43 milliampere. Okay, and now you can find VCE. So your VCE will be VCC minus IC RC plus RE. VCC is 10, IC is this one, 2.84 10 to the power minus 3. RC is कितना है 2 kilo ohm. Okay, 2 plus RE is 200 ohm. 200 I can write 0.2 kilo ohm. Okay, power cancel. So this is your 10 minus 2.84 into, okay, let me write here. This will be your 10 minus 2.84 into 2 plus 2.2. Tell me how much is coming. Sir, 3.74. Yes, so answer is 3.7 volt. This is your 3.7 volt is your answer. So कोई भी मेथड यूज करो, इसको चाहो तो अप्रोक्सीमेट से ट्राई करना कितना आ रहा है, ओके, ये आपका होमवर्क है. इस सेम क्वेश्चन को ट्राई विथ अप्रोक्सीमेट मेथड, ज्यादा फर्क नहीं आएगा. Yes, sir. Yeah. Okay, this was your biasing. Now let us discuss
some special transistor circuits. Okay. So special transistor circuits. The one application which I'm going to discuss, first application, Zener follower regulator. Zener follower regulator. Okay. So let us take a voltage divider circuit. Okay. So yeah, no resistance is there. Here VCC is there, VCC, and here one resistance is there, which I calling now RL. RL. Here one resistance is there, and current is there, and here I'm connecting this Zener diode. Okay, or if you want connect here. This is Zener diode, which has Zener voltage VZ, and this is your VBE. So this resistance is R. And I'm interested to find the V naught here. Okay. Just look at very good question. I want to how voltage here is become regulated. Once it is connected like this. So this voltage will be always constant. Okay. Now here current will go IB and here current will go IZ, Zener diode. So obviously this current will be your IB plus IZ. Okay. Now if I simply see this circuit, ये वाला circuit मैं अगर देखूं, okay. So once Zener diode is on, so first condition the Zener diode should be on. That means this point voltage should be equals to VZ or greater than VZ or equal to greater than VZ or equal to VZ. Okay, so this VB, this point should be greater than VZ. Once this is VZ greater than VZ, automatically this Zener diode is on. And once this Zener diode is on, I can replace this Zener diode by a battery of VZ. Okay. Now if I write the KVL in this loop, I can write minus VZ plus VB equals to plus V naught equals to 0. Here V naught is basically VE. Okay, this is RE RL, but I'm writing I'm taking output across this one across ammeter. So I'm calling it V naught this time. So now automatically my V naught become VZ minus VBE. Okay. Now since generally your VZ is greater than VBE or VB 0 or small, so you can say your V naught is almost equal to VZ. Okay. So this circuit gives always constant voltage across this resistance. Sir, V naught equals to VZ plus VB now. V naught equals to VZ minus VB, na? Here you see, na? This VZ minus VZ plus VB plus V naught. So this circuit always gives you the constant voltage. Only thing is you have to first calculate whether this diode is on or not. Once on, then this will be a regulated voltage. अभी इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं. कंडीशन यही है ना, उस पॉइंट पे वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू VZ चाहिए ना. हाँ बस VB, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, जो भी बोलो पॉइंट B बोलो VB बोलो इधर, this point should be this point should voltage should be VZ. Okay. Now
Let us take one example. I have been given this resistance here. This is a Gino diode here. Okay. And this is your V input. I'm applying here V input. Okay. Which is equals to 20 volt. And this is your 680 ohm. Okay. And some current I is flowing here. IB is going here. IZ is going here. So your I is equals to IB plus. So your I equals to IB plus IZ if IZ present. Okay. And then you have same circuit. V in load here, same circuit. This is VBE. Okay, this is your VBE. Okay, here VBE. Okay, this point to okay, this point to this point. This is your VBE. And here I am putting a load resistance. So this is basically a ammeter, base, collector. Okay, and here I am making it ground, and this is a 15 ohm. Okay, and I am measuring the V naught here. Exactly same circuit. I am measuring the V naught here. Okay, and this is the load RL. I call this current as IL. Okay, so this is the VCE. So this is your VCE. Okay, so now in this question, beta is given 80. Beta is given 80, and VB is given 0.7 volts. So it's asking what is IB, IL, IZ. Okay, so find IB, IZ, IL. You need to find this one in the circuit. Okay, and of course you need to find the V naught also. V naught also. So सर VZ दिया है इसमें? VZ भी दे रखा है इसके अंदर. VZ आपको दे रखा है 10 वोल्ट. अब पहला काम क्या है? The first job is that we have to see whether this diode is conducting or not. Okay, so I need the potential of this point. Huh? So let us say it is not conducting, is open, first thing. Okay, I am saying this is open. So once it's not open, so this current I is equals to IB. Okay, so let us first find what is the value of IB in the circuit. So here this is 20 volts, so I can write minus 20 volts, and now this current will be your IB automatically because this is no current going, so all the current is going here. So as soon as this is open, this current will reduce, and once this current will reduce, this voltage will automatically increase. Okay, because now this IB otherwise current is coming IB plus IZ, so in milliampere. But now you remove this one, so now current is only going here. This become IB, this whole current become IB, and the voltage drop here will reduce, and you get high voltage here. Okay, so now it is minus 20, and then you have IB into 680 ohm. Okay, and then you go from here. This is your how much VBE. Okay, and then here this current is IE. IE means your beta plus 1 IB equals to 0. This is just for check. This for check. Okay, check कर रहे खाली इसको कि वो ऑन है कि नहीं है. फिर RL भी आएगा ना, RL तो कहाँ कंप्लीट हो रहा है हमारा? बीटा ई बी RL. हाँ, ओके, ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया यहाँ से. अब मुझे बस तुम बता दो IB की वैल्यू कितना आ रहा है निकाल के. IB की वैल्यू कितना आ रहा है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो जो बचा हुआ वो यहाँ आ जाएगा. अब बता दो 10 से ज्यादा है कि नहीं है, जो वोल्टेज आ रहा है वो 10 से ज्यादा है कि नहीं है.
बताओ कितना आ रहा है? ज्यादा आएगा देखो। चलो 10.1 17.9 मिली एम्पीयर, मिली। करंट कितना आ रहा है? 0.017। जो भी आ रहा है एग्जैक्टली बताओ, माइक्रो एम्पियर में बताओ, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में है? एक जना और कंफर्म करो कितना आ रहा है? बीस माइनस 0.7, IB is what? 20 minus 0.7, okay, upon what will come? बताओ। IB into 660 ओम, तो 668 ओम तो आएगा प्लस बीटा प्लस 1 81 इंटू RL कितना है आपका? 15 ओम। 10.1 ये IB समझ कमिंग 10.18 10.1 एफ, वो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर? 10.1 मिली एम्पियर आया। मिली एम्पियर। IB यस यस सर, आईबी। चेक करो अच्छे से कैसे IB आएगा? 10 मिली एम्पियर आएगा। नहीं सर, 10.1 मिली एम्पीयर ही आ रहा है। 10 पर तो रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। 15 किलो ओम होगा जस्ट रेजिस्टेंस में। चेक करिए बार रेजिस्टेंस भी आपका 15 ही है। 20 वोल्ट 680 ओम। 680 को अगर मैं 1000 भी कर दूं, 500 कर दूं, 500 और ये 5 ठीक है। और फिर यहाँ पे ड्रॉप कितना आ रहा है बताओ? ड्रॉप कितना आ रहा है अक्रॉस 680 ओम? 19.3 680 5 40, ओके, ये आ गया 40 405। तो 19.3 680 एंड 405 कितना आ गया? ये 1085 मिली एम्पियर में आ रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बताओ कितना आ रहा है? ये कितना मिली एम्पियर बोला? 10 कितना बोला? 19 पॉइंट कितना बोला? 10.1 मिली एम्पीयर। 10.1 आएगा यहाँ से, ठीक है। 10.1 मिली एम्पियर। सर कौन सा? सर माइक्रो आ जाएगा सर, वो 15 किलो ओम है ना सर ये, नहीं 15 ओम है। 15 ओम ही है। तो ओम के साथ नहीं होंगे पर आएगा। तो कितना आ रहा है? ये मिली एम्पियर आ रहा है ना? 10.1 मिली आ रहा है ना आपका? यस सर। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है बताओ ना? अक्रॉस RP 680 इंटू 6.868। हाँ तो बस फिर क्या हो गया ना, 10 मिली एम्पियर हो गया। अब ये बोल रहे हो तुम कितना है? 6.8 वोल्ट है, ठीक है। 6.8 वोल्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये 20 आ रहा है, 6.8 ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 20 माइनस 6.8 हाउ मच? 20 माइनस 6.8 हाउ मच? 13.2 volts. 13.2 volts. सुना था वोल्टेज दिस पॉइंट इज व्हाट? 13.2 volts और 10 ही चाहिए। ये ऑन है कि नहीं है? तीनों डायोड ऑन है? ऑन है सर। बस ओके, इस पर्टिकुलर इसमें करंट ज्यादा आ रहा है, ओके ठीक है। अब नाउ this is on, so once this is on, now you can replace this by a VZ of 10 volts, okay। अब पूरा सर्किट ही चेंज हो गया। अगर अब ये this is now 10 volts, okay, now again you can find the current here in this loop, so current will be what? So here minus 20 volts plus, now current will be I into 680, okay, 680, and now current will go here. So this is your plus VZ equals to 0, and your I will be 20 minus VZ is 10. 20 minus 10 upon 680, that is 10 upon 680. कितना आ रहा है? Current is coming 14.7 milliampere. Current is coming 14.7 milliampere. यस सर। यस। Okay, this is your I value. Now let us find out this I value, you know, but your IB you don't know still ना। अब इसको भूल जाओ। अब ये सर्किट देखो,
यहाँ से इस सर्किट में IL कितना होगा बताओ? IL के लिए पहले हमको चाहिए IC है ना। अब पहले मैं वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेता हूँ अक्रॉस दिस में। व्हाट इज V नॉट? अब V नॉट कितना आएगा बताओ? V नॉट विल बी योर कितना आएगा बताओ? V नॉट ILRL नहीं खाली V नॉट वैसे बताओ, बिना IL करके बताओ। IL पता नहीं अभी। 10 वोल्ट VZ के इक्वल सर। हाँ ये पूरा सर्किट लगाओ ना, ये यहाँ से लेके माइनस VZ सो माइनस VZ प्लस VZ प्लस VBE प्लस VB प्लस प्लस V नॉट। V नॉट 0। सबका V नॉट कितना आएगा? VZ माइनस VB तो कितना आ गया? 9.3 9.3 वोल्ट आ गया। और 9.3 आ गया तो डिवाइड कर दो इसको 15 से, तो आपके पास IL आ जाएगा। 9.3 वोल्ट डिवाइड बाय 15, दिस विल बी करंट। व्हाट इज द करंट? दिस करंट विल कम 0.662 okay ampere, or if you convert in milliampere, how much will come? यही आ रहा है 0.62 एम्पियर। मिलियम्पियर में कितना आएगा? मिलियम्पियर में कितना आएगा बताओ? 6.2 मिलियम्पियर। मिलियम्पियर करने के 1000 से मल्टीप्लाई करो। 1000 से क्यों? एम्पियर है ना, 10 620 ना, 620 मिली एम्पियर। 620 मिली एम्पियर। 620 यस सर। ओके 620 मिलियम्पियर। चलो 620 मिलियम्पियर कर लेते हैं। और ये क्या है? आई आपका, ठीक है। और बीटा कितना है? 80। बीटा कितना है? 80। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज कमिंग योर फॉर IC। दिस इज योर IC। ओके इस IC। सो नाउ यू कैन फाइंड व्हाट इज IB। IB कितना आएगा बताओ? IC अपॉन बीटा। तो इसको आईसी कैसे लिखा आपने? तो ये आई तो है, ये करंट जो आ रहा है आई है इक्वल टू IC है। आई, हाँ ओके, आई इज इधर देखो बीटा बीटा प्लस 1 करो, जो भी करना है ऑलमोस्ट इक्वल है। सो दिस विल गिव यू IC। ओके IC इज योर 620 मिली एम्पियर डिवाइड बाय बीटा इज हाउ मच? 80। तो कितना आ गया बताओ? IB कितना आ गया? IB will come your 7.75 milliampere. IB is coming for 7.75 milliampere. हाँ सर। Now you know this I, you know IB. You can find what is IZ. Okay. So now IZ will be your this I minus IB. Okay, that is 14.7 minus 7.75 milliampere, and that will give you, मेरे पास जो आंसर है कितना आएगा बताओ? 6.95 मिलियम्पियर। 6.95 मिलियम्पियर। 6.95 मिली एम्पियर। मिलियम्पियर। ओके तो सब आपको ये आई पता चल गया। ओके आई पता चल गया, IB पता चल गया, P नॉट पता चल गया, IL पता चल गया। ठीक है, आप चाहो तो VC भी निकाल सकते हो। ये VC कितना आएगा बताओ? ये कितना है? 20 वोल्ट। तो VC कितना आएगा? 20। और ये कितना है? ये पॉइंट कितना है? V नॉट। VC क्या है? 20 माइनस ये पॉइंट C, तो ये पॉइंट आपका VE है। VC तो VE क्या है? V नॉट ही तो है। तो VC क्या आएगा? 20 माइनस V नॉट। V नॉट कितना आया था? 9.3। 9.3। so you can find how much? 10.7 volt. So in this way you can calculate. Okay, so let us do one more problem, similar kind of problem. We'll do it. अब क्या आपको करनी है प्रॉब्लम? So okay, now you have this circuit.
Here you have input where I'm giving 20 volts. IB. Okay. G0 diode here. This is 12 volt. Here 1 kilo ohm. अब ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, आप लोगों को करना है, ठीक है. VCE. This is your VCE. VCE. This point is E. Okay. Or here you are measuring V0. This is 220 ohm. Beta is given 500 this time. Okay. Beta value is 500. Beta is 500. Okay. And VBE you can take 0.7. VBE you can take 0.7 volt. Okay. The question बोल रहा है find out V0. V0 निकालो. Then once you know the V0, then you have to find VCE, VCE. Then this current, they say this is IR. Find IR. Then this current is IZ, IB. Okay. Find IZ, IB. Okay. And this current is say IE. Find IE. IE or IC, IE. Find IE. Okay. निकालो. बताओ कितना आ रहा है. V0 कितना आएगा बताओ फटाफट. 11.3. बुलेला is there? Sir, I'm calculating, sir. How can you take so much time? Just I'm asking what is V0? How to calculate V0? Just carefully look. Yes, sir. Minus VJ. Minus, how is the minus? You just tell me V0 V0 minus VZ. Okay, you're writing equation. Write the equation. Tell Yes, me what sir. is V0. Tell me V0. VJ plus VBE plus V0 equals to 0. Wait, sir, I'm calculating.
So first you have to check this is on or not. That is your homework. Okay, that is homework. Check is homework. Okay, so assume this is on. Now what will come V naught? 11.7 volt. Okay, this is 12 minus 0.7, 11.3 volt. Okay, so once you know the V naught, now you know the IL. What is I here, circuit? What is this IR? 20 minus 12 upon 220. What is IR? Eight upon 36.3. very good. 8 upon 220, 36.4 milliampere. IL कितना आएगा? IL कैसे निकालते हैं? ये वाला IL 11.3 divided by 1000, 1 kilo ohm, so 11.3 milliampere. IB is your IC upon IC जो IE जो निकाला है, that is IL divided by beta 11.3 milliampere. Beta is 500. कितना आ रहा है? That is 22.6 microampere. 22.6 microampere. Then is for minus 5 Yes sir, यही आ रहा. microampere. IB मिल गया आपको. अब क्या निकालोगे? IZ निकालो. IZ ऑलमोस्ट यही रहेगा. V माइक्रोएम्पियर में, ये मिली एम्पियर में. ये कितना है? 0.2 मिली एम्पियर, 0.02 मिली एम्पियर है. तो योर IZ विल बी 36.4 मिली एम्पियर. ओके, मिली एम्पियर माइनस इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.0226 मिली एम्पियर. ओके, तो कितना आएगा ये? 36 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. 0.02. ओके, तो 2 0 में से 2 जाएगा नहीं. ओके, 0.02. 36 पॉइंट कितना आएगा आपका? 36.37. 37 मिली एम्पियर. 0.377. हाँ ठीक है, ये भी है. क्या आ जाएगा आपका? VC कितना आएगा? VC आपका आ जाएगा 20 माइनस E कितना है आपका? 11.3, 9.7 वोल्ट आ गया. IZ मिल गया, IC मिल गया, IB मिल गया, IR मिल गया, IL मिल गया. That's it. So in this way you can Last solve. वाला 8.3 आएगा ना VC? हाँ? 8.7 ना VC? Last. हाँ, ये 8.7 है. सही कर दो 8.7. Okay, so this way you can solve the circuit. Okay, so there's two a few more techniques, special circuits we'll discuss tomorrow. Let us do one more problem. We have given this circuit. Okay, Bulera, you need to do this question. Okay, 100 kilo ohm. This is 5. This is a 5 volt. Okay, 100 kilo ohm. Here current is going IB obviously here. Okay, and this is your ground, no resistance. Here is your VCC, and here yours is RC. Okay, RC is 1 kilo ohm. RC is your
1 kilo ohm. So in the question, it is asking what is the voltage at this point? What is VC? Find VC, and they given you VCC equals to 10 volt. They given you 10 volt. Beta, they given you 100, and VB, they given you 0.7. VB is 0.7 volt. Calculate. So you need VC. VC equals to, tell me what is the formula, Kangana, Kanchan? VC equal to what? एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इसमें। VC equals to बोलेगा VC sir. VC equals to VCC. VC equals to this point voltage. How to find this point voltage? How many times one single thing I have to repeat? VC is equal to VCC minus VCE. Wow. अभी आज क्लास में आते तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तुमने बताया कि VC कैसे निकालते हैं। VC और VC में डिफरेंस क्या है? क्या बताया था? This is your E. This is your V. This is your C point. Here voltage VE, which is 0 here. What is VC? How to calculate VC? VCE plus VE sir. Huh? VCE plus VE. VCE plus what? VE. VE. And what is VE value in the question? In this question, what is the value? V, this is your C, VC. Here say VE, and V is connected to this is V 0. So your VCE basically what? VC minus VE. Okay, so VC become what? VC in this particular question. VC equal to VC in this particular question. Okay, because there's no resistance. Now you want to find the VCE. Tell me how to find VCE. So VCE equal to VC is equal to what? Bulela, tell me. Nidhi, VC equals to what? Nishu, शिवानी पवार, कोई नहीं है। तनु, it's not working. Am I audible or not? Audible, sir. हाँ, तनु नैन. How to calculate VC? हाँ बताओ, कोई बताओ कैसे करेंगे? VC equals to what? VCC VCC minus ICRC. तो इसमें कितना क्या है? यहाँ लगा दो माइनस VCC प्लस ICRC इक्वल टू VC, एंड VC यहाँ पे क्या है? ये आपका VC है, और नहीं भी निकालना है तो ये VCC कितनी बार बताया है आपका? VC जो होता है दैट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC होता है, और VCC आपका क्या होता है? VCE क्या होता है? VCE आपका होता है VCC माइनस ICRC प्लस RE होता है। अब इस क्वेश्चन में RE है ही नहीं, तो आपका VC और VC बराबर हो जाएगा। कितना आ रहा वैल्यू बताओ VC का?
Now how to calculate VC? VC के लिए IC चाहिए पहले. 5.7 volt, sir. Yeah, 5.7 volt आ रहा है. Okay. Your VC is your 5.7 volt. Okay. So first you need to calculate IC. This is 0 here. First you need to calculate IC. RC is given. And IC is your beta IB. IC is your beta IB. So first you need to find beta value is given 100. So 100 IB. So find IB first in the circuit. And IB sir 43 microampere है IB और 43. IC 4.3 milliampere आएगा. IC is 4.3 milliampere. ठीक है. So I'm stopping here. Okay, I'll do next application. We will do tomorrow. Okay. Sir, हाँ. how many lectures will left to complete this chapter, sir? One more. Okay. Why? Who's asking? Bulela. Sir? You asking, na? Yes, sir. Why? You don't like transistor? Not like that, sir. And okay. So tomorrow one more class transistor, and then remaining we'll do what? We'll do AC analysis of transistor at the end. Okay, after op-amp. Sir temperature effect भी हाँ वो भी होगा बता देंगे. इसका, वो भी करा देंगे. डायोड का और इसका. हाँ वो करा देंगे. ओके थैंक्स. चलो. Thank you, sir.